everything's digital. KYC, NPS, now APY. Pension account is opened. Everything's digital. Everything's digital. Building digital public infrastructure for digital India. Protean. Change. Investments, and the second is 361 Wealth and Asset Management. Along with that, a host of public and private sector banks are there. This includes State Bank of India, HDFC Bank, PNB, Axis Bank. Similarly, at the time the depository was set up, we had global custodians investing in the company, and these global custodians still hold share with us. These are Standard Chartered, Citicorp, Deutsche Bank, HSBC. So we've got a very varied and very fine marquee institutions which are our shareholders. So at the top of the company, we have a 10-member board. The board is chaired by Mr. Sailesh Haribhakti. We likewise have got various board members who are veterans from the space of technology, communication, strategy. We have with us 6 independent directors. 2020, the government came out with a policy framework that the future DPIs would be created in the form of open digital ecosystems. And today we see there are multiple ODEs getting created, open digital ecosystems. And we have today taken a strategic interest, innovation layer where you build consumer and corporate technology. And I'll give a few examples. Today we are building infrastructure, digital infrastructure for areas like digital commerce, mobility, which come under ONDC. We invested in people and technology to build open source stacks. And lastly, what was the enabling parameter was the regulation. So today, as we all know, as we go digital, we are creating a lot of data. So data-aligned regulations, whether it is account aggregator, whether it is the Personal Data Protection Bill, which is now the DPDP Act. So we are building a complete services as a technology service provider, and that is where we've also got an account aggregator license from the Reserve Bank of India. So putting all this in context, just a simple glimpse, the way we see the company evolving from here, so to grow. So every year around 5 to 6 crore PAN cards are going to be issued going forward also. And we see this business continuing and growing going forward. On the pension front, again, it's an under-penetrated pension society for us. Today, if we look at our Atal Pension Yojana accounts, we have hardly 4.8 crore accounts, and even the Jan Dhan accounts stand at 50 crores. Likewise, on the National Pension Scheme, there are 1.6 crore subscribers, and some equivalent product like EPFO today has 27 crore subscribers. So there's a huge headroom for growth in all our existing business, be it PAN or be it pension. And again, looking at the new areas, there's high growth potential because clearly digital commerce retail penetration today is very minimal. It's in low single digits. So that is where we see a lot of new areas of digital intervention to create large ecosystems going forward. In a summary at this stage, I would just call the highlights, investment highlights for the company. So clearly strong growth in potential, especially with the demographic. टेक्नोलॉजी रहती है उसके बाद में 2-3 साल के लिए उसको मॉनिटर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. तो गवर्नमेंट्स आल्सो वांट दैट. तो ये सब काम करने में हमें 4-5 जो हमें टाइम लगा वो लगा 4-5 क्वार्टर. और उसके बीच में जो हमने कंट्रीज से जो एंगेज किया, आरएफपीज बिड की, तो उसके अंदर हमारा काफी ट्रैक्शन है. But our Prime Minister has been talking about these digital services in foreign countries for the last 4-5 years. With Aadhaar, whether it is the other ecosystems as we spoke about that are getting built. So I think we are as a technology service provider enabling this infrastructure. So that is the role of the company, and that is what we have been doing since 2003. What is the market size? I think that the technology and 5G penetration of internet is growing faster in rural area. So इसमें देखिए ट्रांजैक्शन करनी हो, आज EPS ट्रांजैक्शंस होती हैं, लोग माइक्रो ATM के जरिए अंगूठा लगा के पैसे विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से, और वो घर पे भी सर्विस मिलती है. सो ये जब सर्विसेज आप करते हैं तो उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर कैपेबिलिटी होगा देयर. सो हमारा मानना ये है कि आज जितना भी इंडिया का पॉपुलेशन है, एक तरीके से जितना डिजिटाइज होगा, दैट ऑल विल लीड टू बिजनेस फॉर अस. सिमिलरली आप अगर देखिए पैन कार्ड वगैरह इशुएंस है,
आज आप पैन कार्ड लेते हैं, उसके ज़रिए ऑनलाइन पैन वैलिडेशन होता है, अकाउंट ओपनिंग होता है. सो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, दे आर बेसिकली इन लाइन विद द डिजिटल इंडिया. एंड एज मोर एंड मोर पीपल गेट एक्सेस टू डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन हम बात करें कि वो कहाँ 12 लाख करोड़ की कंपनी यहाँ पे भी 3200 करोड़ की उस मार्केट कैप पे लेके आ रहे हैं, नीच पे. तो कैसे आप देखते हैं कंपटीशन पे, ऐसे कंपटीशन जो आपको बना के रखेगा इसमें? तो इसमें एक दो चीज़ें हमारी विभिन्न हैं, बिकॉज हम आज देख रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन लार्जली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गया है. तो वही जो पुराने हमारे एग्जांपल हैं, एक तो जो हमने शुरू में काम शुरू किया है, टैक्सेशन का पूरा मैंडेट और टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मॉडर्नाइज किया है. आप बैंक ढूंढते हैं और पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इधर बाय सेल में वो जो बीच में गेटवे आता है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन जाती हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी है. सो ऐसे ही हम बाकी एरियाज़ में, एजुकेशन में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में ले लीजिए, तो पूरा DPI हम बना रहे हैं. सो दैट इज़ द एरिया जिनमें हम एक्सपैंड कर रहे हैं. तो ये कोई पेटेंटेड आपकी टेक्नोलॉजी जो डिफेंसिबिलिटी देगी आपको? देखिए, जैसे आधार बना था, जैसे UPI बना था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है जहाँ पे आप ओपन कर देते हैं इकोसिस्टम और आप एक डिजिटल हाईवे और रेल्स प्रोवाइड करते हैं. अब उसके ऊपर आप कंज्यूमर टेक्नोलॉजी बना देते हैं. अब UPI का हम सब वो डेटा हमको पास करता है और हम आधार डेटाबेस से आइडर कंफर्मेशन देते हैं या आपकी डिटेल्स जो भी इसमें चाहिए कॉस्ट थी उसकी, उसका हमारा प्रॉफिट नीचे आपको दिख रहा था FY22 में, जो कि 23 में नहीं है नेचुरली, बिकॉज इट वाज अ वन टाइम आइटम. सेकेंड थिंग जो आपने रेम्यूनरेशन का नाम दिया, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो हमने सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया, बिकॉज अभी हमने प्रेजेंटेशन में बताया कि हमने 3 बिजनेस वर्टिकल से 6 बिजनेस वर्टिकल्स में अपनी कंपनी को लेके जा रहे हैं. तो इट इज अ मेगा एक्सपेंशन प्लान, एंड इन एज पार्ट ऑफ दैट हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं इन पीपल, बिकॉज हम लोग पीपल हायर करते हैं टेक्नोलॉजी के, और फिर ये लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होती है और फिर रेवेन्यू स्टार्ट होता है. इम्पैक्ट एग्जैक्टली इसी से ही है. तो अदरवाइज मेरे जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल है हिस्टोरिकली, उसमें मेरे मार्जिन्स में इम्पैक्ट नहीं आता. जो ये इम्पैक्ट आ रहा है, ये बेसिकली जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं इन फ्यूचर बिजनेस वर्टिकल, तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं. we have in digital public infrastructure, and that is what we said in the DRHP also. We don't find any one company as a peer. So separately है. आज अगर आप पेंशन में जाएंगे, so then the other two CRAs, K Fintech is there, CAMS is there. If you go into a taxation business, UTI is there, but nobody is running the Account is opened. Everything's digital. Everything's digital. Building digital public infrastructure for digital India. Protean. Change is. I'll just like to quickly recap the summary of the issue. Price band of 752 to 792. Issues opening on Monday. नमस्कार, मैं सुरेश सेठी बोल रहा हूँ. मैं प्रोटियन eGov टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हूँ. हमारी कंपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है देश के लिए. पिछले 28 सालों से हम गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और हमने लार्ज स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है. हम IT एनेबल्ड प्रोडक्ट, सर्विसेज और सॉल्यूशंस कंपनी हैं. हमने देश का टैक्सेशन मॉडर्नाइजेशन किया है, जहाँ पे हम पैन कार्ड भी इशू करते हैं और पूरा पैन का डेटाबेस हमारे पास है जिस पे हम वेरियस सर्विसेज ऑफर करते हैं. सिमिलरली पेंशन में हम देश के पहले CRA हैं जिस पे नेशनल पेंशन स्कीम हम पब्लिक इशू के साथ आ रहे हैं. हमारा इशू खुल रहा है मंडे नवंबर 6 को और रहेगा चालू नवंबर 8 वेडनेसडे तक. और हमारा शेयर प्राइस बैंड है 752 to 792.